बड़े सारे wannabe एक्टिविस्ट्स के लिए फॉर द लैक ऑफ एनी ओरिजिनल थॉट मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म एक गो टू आइडियोलॉजी रहती है। और हम जैसे अनपढ़ लोग जब पॉइंट आउट करते हैं इसकी कमियां या फिर इसका क्रिटिसिज्म, तो they get upset and kind of as if they have taken Karl Marx as their god. uh, and अक्सर हमसे यही कहा जाता है, have you read Marx, and do you have not understood communism, etc. Okay, fine. एक किताब है मोहम्मद असद साहब ने लिखी है, इस्लाम एट क्रॉस रोड्स। ये लगभग आज से 100 साल पहले इस किताब को लिखे हैं। 100 साल पहले मीन्स कि इस वक्त टू बी प्रिसाइज 1934 में लिखी है, और उस वक्त कम्युनिज्म इज़ ऑन इट्स राइज और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का आपस में मामला चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है जब ये लिख रहे हैं। इसमें आई वॉज रीडिंग दिस टुडे एंड आई फाउंड दिस पैराग्राफ। ये कहते हैं कि it is not without interest to observe how the anti-religious evolution sketched above has been brought to its logical climax in Soviet Russia, which on her cultural side does not represent a development essentially different from the rest of the Western world. On the contrary, it seems that the communist experiment is nothing else but the culmination and the fulfillment of those decidedly anti-religious and ultimately anti-spiritual tendencies of modern Western civilization. It may even be that the present sharp antagonism between the capitalist West and communism is at its root due only to the different pace at which those essentially parallel movements are progressing towards their common goal. Their inner similarity will no doubt become more and more pronounced in future. But even now, it is visible in the fundamental tendency of both Western capitalism and communism to surrender the spiritual individuality of man and his ethics to the purely material requirements of a collective machinery called society, in which the individual is but a cog in a wheel. हमसे तो बड़ी आराम से कहा जाता है कि आप अनपढ़ हैं, जो कि हम हैं काफ़ी हद तक, जो कि हम सब हैं काफ़ी हद तक। लेकिन मोहम्मद असद से अब क्या कहें, ये तो अनपढ़ नहीं है। ठीक। The point is, and the truth is, most of these wannabe communists, they do not understand communism. One of the fundamental facts of communism is material is all that there is, and that in there makes it incompatible with what we believe in.